So yesterday we just started with your concept of rolling beta. So rolling में मैंने क्या बोला था? Combination of the translatory and rotatory motion is called as of your pure rolling. चलो इसको थोड़ा understand कर लेते हैं. Understanding of rolling motion. Understanding of your rolling motion. ठीक है? केस नंबर 1 देखो बेटा. अगर VCM जो है ना ग्रेटर देन R ओमेगा है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन की वेलोसिटी रोटेशन से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? देयर विल बी योर सडन ब्रेक, सडन ब्रेकिंग. यानी बाइक को जब अपन सडन ब्रेक मार रहे हैं, वो सिचुएशन में क्या हो रहा है? VCM will be greater than your R omega. यानी अगर we are talking about this condition, sudden braking मतलब this will be your slipping. This will be your slipping. Clear है बेटा? यानी what type of friction will come into existence? Kinetic friction. स्लाइड कर रही है तो स्लाइड करेगा, तो द बॉडी मूव कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा वहां पर? काइनेटिक फ्रिक्शन. क्लियर है? अगर VCM इज ग्रेटर देन R ओमेगा, VCM मतलब क्या बेटा? जब ये ट्रांसलेटरी मोशन में हो रही है बॉडी, इसके पास जो वेलोसिटी होता है सेंटर पे VCM, और ये जो रोटेट हो रहा है उसके पास जो वेलोसिटी होती है R ओमेगा. अगर इसके अंदर VCM इज ग्रेटर देन ऑफ योर R ओमेगा का सिचुएशन हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर सडन ब्रेकिंग, यानी स्लिपिंग होगा. स्लिपिंग होगा मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का डेवलपमेंट होगा. तो इस केस में जो है ना, फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा? फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड्स. ठीक है ना? इसके ऊपर फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में ऐड करेगा बेटा? इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है ना, इस पॉइंट पे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये बात क्लियर है सभी को? Yes. इज दिस क्लियर? चलो सेकंड केस. अगर VCM जो है ना लेसर देन R ओमेगा है, isn't it? VCM is lesser than R omega. जैसा मान के चलो टायर इन ए मड, टायर इन मड. इमेजिन करो, इमेजिन करो VCM is lesser than R omega. अगर कोई टायर एक मड में यानी रेत में हो या मे भी मड में हो, अगर फंस गया तो आप गाड़ी को एक्सेलरेट भी करोगे तो रोटेशन होगा लेकिन सामने नहीं जाएगी बॉडी. याद है आप लोगों को? आइडिया है कुछ? Yes, sir. तो वो वाले सिचुएशन में क्या फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में ऐड करेगा बेटा? वो वाले डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. Friction is in forward direction. क्लियर है? तो इस डायरेक्शन में यहां पर हो गया फ्रिक्शन. ये हो गया VCM और ये हो गया R ओमेगा. अगर VCM R ओमेगा से कम है तो बॉडी सामने नहीं जाएगी, वहीं पर रोटेट करेगी. तो वैसे वाले में फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? चलिए थर्ड वन. If VCM is equals to R ओमेगा के बराबर हो जाए, जब क्या होगा बेटा? That will be the condition for pure rolling. That is the condition for your pure rolling. Pure rolling के लिए condition हो जाएगा. ठीक है बेटा? तो बॉडी नहीं रोल करेगी, रोल करेगी सामने नहीं जा रही है, then that will be what type of a friction present will be there बेटा? Static friction. अगर VCM R के R ओमेगा के बराबर है राइट ना, देन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटा? स्टैटिक होगा कंडीशन. क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये वाले सिचुएशन में मैं क्या बोल सकता हूँ? पहले वाले सिचुएशन में फ्रिक्शन इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन बॉडी मूव कर रही है सामने, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी इन द फ्रंट डायरेक्शन. तो ये वाले कंडीशन में क्या था? VCM वाज ग्रेटर देन R ओमेगा, और लेकिन VCM लेसर देन R ओमेगा. ये कंडीशन क्या है? VCM इज लेसर देन R ओमेगा, मतलब इसके ऊपर जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो फ्रिक्शन भी सेम डायरेक्शन में रहेगा और इसकी वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में रहेगी. ठीक है ना? लेकिन R ओमेगा कौन से डायरेक्शन में रहेगा बेटा? R ओमेगा इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. क्लियर है?
एनी डाउट? No. चलो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा रोलिंग के अंदर? टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग में बॉडी रोटेट भी हो रही है और ट्रांसलेट भी हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन कितना बोला था मैंने आपको? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन कितना होता है बेटा? हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, यानी कंबाइंड ट्रांसलेटरी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा बेटा? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ योर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। CTR मतलब कंबाइंड ट्रांसलेटरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? दोनों को ऐड कर लीजिए। दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू आई इंटू योर ओमेगा स्क्वायर। We know that V is equals to R omega, तो omega is equals to V divided by your R, यानी ये बन गया मेरे पास हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू आई, ओमेगा वैल्यू विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? तो इसके अंदर Yes. अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर को अगर कॉमन लूं तो कैन आई राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द बॉडी एज व्हाट बेटा? For any condition, I can write I is equals to m into k square. K is known as radius of gyration. So ये हो गया m into v square plus ये हो गया half into I. I is equals to m into k square into v square divided by r square. ये भी same mass रहेगा बेटा. This is also same mass. So this will be equal to your m into your k square. तो क्या half m v square मैं बाहर निकाल सकता हूँ इसमें से? So this will be equal to your half into m into v square, अगर बाहर निकला this is 1 plus of your radius of gyration का square divided by r square. So this will be the total energy of your rolling body. Clear है? Yes, sir. ये पूरा डेरिवेशन वैसे भी याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो, that is more than enough for it. Clear? एक एग्जांपल दे रहा हूं, देख लीजिए। मान के चले हम टेकिंग ए रिंग जिसका मास है 2 kg और मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से। माय क्वेश्चन इज फाइंड टोटल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। कर सकते हो क्या? देखो कौन सी बॉडी है मेरे पास? रिंग है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा मेरे पास? फॉर्मूला इज राइट नाउ फॉर मी टोटल energy will be equal to half into m into v square into 1 plus k square divided by r square, जो ऊपर लिखा था वही लिख रहा हूं, ठीक है ना? तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? I is equals to m into your r square. I की वैल्यू क्या होती है? m into k square is equals to m into r square. m square will get cancelled. So k square की वैल्यू किसके बराबर आ रही है बेटा? r square के बराबर आ रही है। So this value will become for me half into m into v square into 1 plus k square की value r square divided by r square. ये हो गया, तो that is will become for me 1. यानी this will become for me how much बेटा? Half Sir, 200. into v square. ये हो गया 1 plus 1 2. ये 2 चले गया. That will be equal to m into v square. Very good. मास कितना दे रखा है? 20. वेलोसिटी कितना दे रखा है? 10 square. 10 square मतलब 100. 100 into 2 that will be equal to 200 joules. आया? Yes, sir. अगर ट्रांसलेशन पूछता तो कितना आता? ट्रांसलेशन पूछता तो कितना आता? ट्रांसलेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ, इसका आधा आना चाहिए। मास कितना देखिए? मास इज राइट नाउ फॉर मी 2 इंटू 10 स्क्वायर, तो 2 और 2 गेट्स कैंसिल, तो 100 आ गया।
अगर ट्रांसलेशन 100 है तो रोटेशन कितना हो जाएगा? रोटेशन 100. 100 होगा ना, तो दो मिलाए तो अपने को 200 हो रहा। आई बात समझ में? Yes, sir. एनी डाउट एनीवन? क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो चार्ट कर, इकरार ज़हर नो सर समझ में नहीं आया बोल रहे। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बेटा? फिर से एक बार करवा दूं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? जहरा, व्हाट डिडंट यू गेट बेटा? कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम? समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। ओके चलिए, तो रोलिंग का बस इतना याद रख लीजिए बेटा, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है बेटा? Yes, sir. पीवाई को स्टार्ट करें बेटा आप लोग। इस टॉपिक पे पीवाई को स्टार्ट करें कुछ तो भी। ओके
So how should we differentiate the center of mass and center of gravity? Center of mass मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर टोटल मास ऐड करेगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब m on g. दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मास मतलब जहां पर मास कॉन्सेंट्रेटेड है. जैसे मान के चलो मैं आपको बोलूं व्हाट इज योर वेट ऑन द अर्थ. वेट मतलब mg. दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. कभी कभी क्या होता है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी कोइंसाइडिंग. दैट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री, isn't it? जैसे मान के चलो मेरा मास जो है ना, मान के चलो 70 kg है. मास ऑन अर्थ इज 70 kg. व्हाट इज द मास ऑन अर्थ बेटा? सर व्हाट इज द मास ऑन द मून? कैन एनीवन टेल मी? चलो मान के चलो मास ऑन अर्थ आई एम टेकिंग 60 kg. 3,000. What will be the mass on the moon? What will be the mass on the moon? हाँ, मास विल बी सेम ना बेटा. मास तो वेट चेंज नहीं हो रहा ना. अगर आप 60 किलो के हो कहीं पर भी थ्रू आउट द यूनिवर्स आपका मास 60 kg रहेगा, लेकिन वेट बदल जाएगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब m into g मतलब मास मल्टीप्लाइड विथ योर g. अगर अर्थ पे है दिस विल बी इक्वल टू 60 into 10. This will be the weight on the earth 60 into 10. What is the weight on the moon? बोले तो क्या करोगे? Weight will be equal to 60 into g by 6, isn't it? 6 ones are 6 tens are, so it is 10 into 10. So this will be the mass on the weight on the. बस समझ में आ रही है? हाँ, mass will not change but weight will change. ठीक है ना? Center of mass and center of gravity का difference वही है. Center of mass मतलब only the mass of the body. Center of gravity मतलब जहां पर वेट के साथ इसके मास के साथ ग्रेविटी का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. ये बॉडी कोइंसाइड करेगा या नहीं करेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ योर बॉडी. जैसा माउंटेन है, माउंटेन के लिए सेंटर ऑफ मास नीचे रहेगा लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी लाइटली अबव, क्योंकि नीचे के टाइम पे मास ज्यादा रहेगा लेकिन ग्रेविटी विल बी लिटिल बिट ऑफ योर अबव. सिमेट्रिकल बॉडी के लिए कोइंसाइड कर जाएगा. ठीक है, गॉट इट? चलो डू दिस क्वेश्चन बेटा. A thin uniform circular ring, a thin uniform circular ring rolling down an inclined plane of inclination 30 degrees. Inclination 30 degrees without slipping. My question is its linear acceleration. Along the inclined plane is. चलो ट्राई करो. I'm giving you the options. G by 2. Second option is G by 3. Third option is G by 4. Fourth option is 2G by 3. Chalo try karo. Let me see how many of you will give me the answer. Acceleration का फॉर्मूला बताया था मैंने. When it is moving down plane. G by 2. G by 2. Hi sir. Sir, because acceleration is g sin theta by 1 plus x by 1. A is equals to G into sin theta divided by how much? 1 plus 1 plus I by r square. yes. So what is the moment of inertia for the ring? Uniform ring rolling. M होगा ना, m into r square. Yes. तो कितना होगा? G into sin 30 by 1 plus G into sin 30 divided by ये हो जाएगा 1 plus 1
The sin 30 is 1 by हाँ तो g कितना by होगा? कितना आया? g by 4. Done. yes. Got it? Any doubt in this Sir, one? to divide, then we'll get 5g by 2, no? क्या बोले? अगर अपन g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें सर, then we'll get 5g by 2, no? g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट पे g में क्यों आएगा? आंसर तो g में ही है ना? Yes sir, yes. अगर आंसर g में नहीं होता तो आप 10/4 लिखते। जी सर। ठीक है ना? तो आंसर तो g में दे रखा है ना, तो कहीं को टेंशन लेना। Yes sir. Got it? So what will be the unit? Meter per second square. आ गया? Yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सॉलिड स्फीयर, हम लोग कल की भी एक पूरी क्लास खाली प्रॉब्लम्स के लिए करेंगे बेटा, पीवाईक्यूज के लिए। इज रोलिंग on a frictionless surface with translational velocity v. With the translational velocity v. If sphere climbs up to a height h, then value of v should be first option is greater than or equal to under root of 10/7 g into h. Second option is greater than or equal to under root of 2g into h, or it is exactly 2g into h, or it is 10/7 g into h. चलो ट्राई करिए। Sphere is rolling on a frictionless surface with a velocity v. यानी मान के चलो अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ऐसा कुछ इंक्लाइंड है, ऐसा मान के चलो, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो उसने बोला कि यहाँ पर एक बॉल है और एक बॉल रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, यानी इसके पास VCM भी है और R ओमेगा भी है, यानी प्योर रोलिंग के नीचे आएगा। तो ये तो ग्राउंड हो गया ना, ये तो ग्राउंड पे रोल कर रहा था, फिर जैसे यहाँ पर आया तो इट हैज बीन गॉन टू दिस पोजीशन, यहाँ पर यहीं पर चले गया, यानी फ्रॉम दिस वन अगर मैं देखूं ये हो गया इसका हाइट, इट इज हाउ मच फॉर मी h। इस VCM की वैल्यू कितनी दे रखी है v, तो बताओ अभी बॉडी के पास ट्रांसलेटरी भी है रोटेटरी भी है, मतलब आई कैन से दैट हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर कॉमन इंटू 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए बेटा mg इंटू h। कौन सा बॉडी है? सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा? I is equals to 2/5 m into r square. I is equals to how much बेटा? m into your k square is equals to 2/5 m into your r square. m gets cancelled, so k square divided by r square की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2/5 के बराबर आ गई। तो कितना बन गया बेटा? हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/5 is equals to mg into h। ये क्या मास और मास यहाँ से कट गया, तो 1 plus 2/5 कितना होगा बेटा? 7/5। so it is v square divided by 2 into your 7/5 is equals to g into h, यानी v square 7 v square divided by 10 is equals to gh। ठीक है ना? तो v square की वैल्यू कितनी हो गई? 10 gh divided by 7 के बराबर हो, यानी v is equals to under root of 10 gh divided by 7 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यानी it should be greater than or equal to this much। Yes. आई बात समझ में? So first option will be the answer। Clear for everyone?
Any doubt? Aya? Check. Next question. Yes. See this one better. A ball rolls without slipping. Actually rolling और बहुत ज़्यादा डेप्थ का कॉन्सेप्ट है बेटा, लेकिन it is not that much required right now for the NEET and JEE mains. Direct formula based questions होते हैं, so please try to do the concentration on that one. A ball rolls without slipping. The radius of gyration of the ball about an axis passing through its center of mass is k. ठीक है? If radius of ball be r, then the fraction of total energy associated with its rotational energy will be कितना होगा बताइए? These are the options, but k square divided by k square plus r square, and this one is r square divided by k square plus r square, and this one is your k square plus r square divided by r square. So tiger, ball rolls without slipping. The radius of gyration of the ball about an axis passing through its center of mass is given as k. If the radius of the ball be r, then what is the fraction of total energy associated with its rotational? पूछ क्या रहा है देखो बेटा, fraction of your total energy associated with its rotational energy. मतलब what I can write here, fraction मतलब rotation divided by total, ये पूछ रहा है ना, isn't it? Rotation का आंसर क्या होगा? half into m into v square into your k square by r square, half into m into I है ना बेटा, I into omega square, sorry. This will be half into I into your omega square divided by rotation के लिए कितना हो जाएगा पूरा translation, half into m into v square into 1 plus k square divided by r square. ठीक है ना? So that can be taken as of your half into I can write I in terms of beta radius of gyration. I is equals to m into your k square. Omega will be equal to v square divided by r square in terms of radius of gyration. ठीक है ना? Divided by this is half into m into v square into 1 plus k square divided by r square. So half m v square, half m into v square will get cancelled. तो ये बन गया मेरे पास k square divided by r square into 1 plus k square divided by r square. Done? इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना बन रहा है? This is your k square divided by your k square plus r square. ठीक है ना? So which option is answer for me? Second. Very good. Got it बेटा? Yes. कोई डाउट और इसमें?
See this question beta. A particle performing uniform circular motion has an angular momentum L. What will be its new angular momentum if its angular velocity in frequency is doubled and kinetic energy is half? ठीक है, rotational kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Half into I into omega square. This is your rotational kinetic energy, isn't it? यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर से लिख रहा हूं मैं तो कितना आ जाएगा 2k डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, isn't it? और एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2k बाई और ओमेगा, ठीक है ना? Yes, sir. isn't it? तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और आई की वैल्यू तो मुझे आ गई यहाँ पर 2k डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा, एक ओमेगा और स्क्वायर चले जाएगा तो L इज इक्वल टू 2k बाय ओमेगा. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. अब प्रॉब्लम में क्या बोला? व्हाट इज द न्यू एंगुलर मोमेंटम इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसीज को डबल कर दिया, ओमेगा को काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया. तो मैंने यहाँ पर लिखा, देख लीजिए, L डैश में काइनेटिक एनर्जी को हाफ हो गया और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जो है ना डबल कर दिया, ओमेगा को 2 ओम हो गया. तो सिंपलीफाई कर लीजिए, ये बन गया 2k डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा, यानी इट इज L डैश इज इक्वल टू 1/4 इनटू 2k डिवाइडेड बाय ओमेगा, यानी कितना बन गया L/4. ठीक है? Yes, sir. डेरिवेशन से बेटा जो रेगुलर क्लासेस में अपन डेराइव करते हैं